Hello everyone, welcome to Web Digital Dunia. If you are just starting with web development, you are in the right place. In today's video, we'll explore the fundamentals of HTML and walk you through the steps of creating your very first web page. So, what exactly is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language, and it's the standard language used to create web pages. Think of it like the bones of a website. It gives structure to the content. Without HTML, the web would just be a bunch of unformatted text and images. HTML structures web content. It's a markup language, not a programming language. Works with tags to define elements like headings, paragraphs, and images. HTML is not a programming language. There are no logic or conditions. It simply tells your browser what content to display and how to organize it. Now let's take a look at the basic structure of an HTML page. An HTML document uses different tags to tell the browser what it contains. The HTML tag tells the browser that everything inside is HTML. The head section contains important information, like the page title. The body tag holds the content that will appear on the web page itself. In this case, we've added a heading using H1 and a paragraph using P. Alright, now it's time to create first web page. Follow along step by step. सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर आपको यूज करना है। तो मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। इसको सिंपल में ओपन करना है और यहाँ पे एक नया टेक्स्ट फाइल लेना है और यहाँ पे एक सिंपल वेब पेज राइट करते हैं जिसको हम यूज करेंगे वेब पेज के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे राइट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे हमने क्या लिया, HTML हेड, टाइटल, बॉडी और यहाँ पे HTML को, बॉडी को और हेड को बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो टाइटल होता है ये क्या होता है कि ये ब्राउजर में शो करता है, जो आपका टैब होता है उसमें शो करता है। देन हमारे पास जो है ये कंटेंट होता है, ये हमारे वेब पेज के अंदर दिखता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे दिखता है हमारा वेब पेज। इसको हम सेव करते हैं, index.html एस। अब इसको हम रन करते हैं। ये हमारा फर्स्ट वेब पेज ऐसा दिख रहा है और ये बॉडी का हमारा पार्ट है जो हमने यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम राइट करेंगे वो हमारा वेब पेज के अंदर दिखेगा। अगर हमने यहाँ पे टाइटल यूज किया है तो टाइटल हमारा ये टैब के अंदर दिखता है, हमारा ब्राउजर में टाइटल दिखता है, ये हमारा वेब पेज पे शो नहीं होता है। जो हम सिर्फ वेब पेज पे हमारा शो क्या होता है, बॉडी के अंदर हमने कोई भी कंटेंट या कोई भी टैग या HTML हमने यूज किया है वो हमारा ब्राउजर के बॉडी के अंदर शो करता है।